Good morning, everyone. We shall start momentarily. Good morning, everyone. On behalf of United Schools Organization of India, I am Jolie Reggie, extending a very warm welcome to all of you for the 10th session of our national webinar series, Beyond Boundaries, Understanding Special Needs. Our topic is self-care of caregivers. This webinar is being recorded and streamed live on USO's official YouTube channel. Feel free to share the link with your colleagues who may not have been able to join live. Increase the volume. United School Organization of India is a registered society established in 1951. It is our mandate to advance the social, cultural, and moral standards of schools in India to global levels by providing schools access to extracurricular tests, seminars, conferences, competitions, campaigns, and programs on a national platform. We aim to create global citizens, providing students and teachers alike avenues to explore their potential beyond academics. With over 7 decades of work, we are proud of the inclusive and holistic impact USO has had on students and educators, building communities of care, respect, and empowerment. Let's take a moment to reflect on the legacy of USO. Since 1951, the United Schools Organization of India has been shaping education beyond textbooks. In 75 years, we have reached 31 states, worked with 16,000 plus schools, and engaged over 5.1 million students and 22,000 teachers. With 500 plus activities and the support of 50 plus partners, USO continues to empower schools with platforms for learning, leadership, and social impact. This journey is about more than numbers, it's about building a generation ready to lead with purpose. Since 2019, we have made special efforts to include children with disabilities in national level activities, partnering with UN bodies and government departments to foster creativity and confidence. Can you hear me? The first national science painting competition for specially able children was organized in partnership with NISCARE and UNESCO in association with the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyanjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Continuing the initiative in 2020, USO conducted a national science poster making competition for specially able children in collaboration with NISCARE and Ministry of Social Justice and Empowerment of India. In 2021, we have again conducted national science painting competition for specially able children. In 2022, in a creative shift, USO introduced ABC to Anybody Can Cartoon, a national cartooning competition designed specially for specially able children. This innovative program was conducted in collaboration with Junior Diamond, offering participants a chance to explore humor and storytelling through cartoon art. In 2023, USO also conducted a national drawing competition for specially able children.
This special edition of the painting competition, titled Art for Change Painting Out Plastics, focused on the pressing issue of plastic pollution. Later the same year, USO introduced Beyond Boundaries, a dance e-festival for specially abled children, celebrating the power of movement, rhythm, and expressions across physical and geographical limitations. Again, building on the success of the Dance E-Festival, USO launched the Beyond Boundaries e-mime competition in 2025. Another recurring activity is our Diwali Mela. Since 2021, it has served as a joyful and inclusive celebration platform where specially able children showcase their talents. We promote inclusivity, not just as a theme, but as a continuous commitment. Over the years, we have worked to ensure that every student, regardless of ability, feels seen, heard, and empowered. Over the years, we have worked as part of this mission, we have organized several engaging and inclusive competitions for both special schools and regular schools alike. These include ABC to Anybody Can Cartoon competition, My Immuno Booster Recipe competition, and H2O Waterways program for children. And now let me tell you about Beyond Boundaries Understanding Special Needs webinar series. This series by USO is currently underway, running from April 2025 to March 2026. It includes 12 focused webinars, each addressing key aspects of understanding and supporting children with special needs, such as inclusive education, innovative teaching strategies, assistive technologies, and behavioral support. Now let's begin. Today's topic is self-care of caregivers. Let me introduce our eminent speaker, Mr. KVS Rao. Is a seasoned civil servant who dedicated over 34 years to public service across various central government ministries and departments, with 20 of those years focused specially on health and disability sectors. He holds an MPhil in International Relations from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Following his retirement in October 2021, Mr. Rao transitioned into the role of life coach, conducting impactful workshops on physical and mental well-being and happiness for students and professionals alike. In his pursuit to promote holistic wellness, he launched a YouTube channel titled Discover Yourself, where the shares valuable insights and guidance. Mr. Rao is also the author of 8 books that span topics such as self-awareness, holistic well-being, and disability policy. His personal interests include cooking and travel, as well as a deep commitment to yoga and intermittent fasting, which he integrates into his wellness philosophy. Rao sir, please, let's start our session. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yeah, good morning, all of you. We can start PPT. Are you operating from your side, PPT? So before I start, let me thank USO for giving me this opportunity to talk on very important topics. And I should also congratulate USO for completing 75 years
of their service in the field of education. They have not only been working in the field of general education, but also they have moved towards special education and also slowly towards inclusive education. So today's topic is self-care of caregivers. It is very important in these days. Parents and other professional caregivers, or it can be relatives, siblings, even special educators and other rehabilitation professionals, all of them, directly or indirectly, come in the definition of self caregivers, because they are giving care to some people around them. Yes, they really have a very huge responsibility to take care of the person around them, but also they have to take care of themselves. And the responsibility has increased because earlier we had a joint family where there were so many members to help the new parents, even children. But now, these days, the parents, the husband and wife, they have to take care of the child on their own. So, therefore, the responsibility has increased. All the more if the child is born with some kind of disability, the worry and responsibility increases because parents, for them, it is a big surprise as to how to handle the child. In fact, handling any child is a difficult task for any parent because they have never had any experience unless there is some senior parents or in-laws, anyone helping them. It will be very difficult to handle them, and more so when the child is having some kind of disability. So, the today I'll be going to deal with just four important topics. What are the reasons that we experience stress, and where does the solution lie? What is self-care, and what are the major changes needed in our approach to life to handle stress and also our life in general? तो दो रीजंस हम देंगे. एक तो जो बाहर का जो इन्फ्लुएंस करता है अपने ऊपर, और दूसरा है इंटरनल रीजंस जो अपना अंदर में माइंड के अंदर जो गुजरता है वो भी हमको अफेक्ट करता है. तो एक्सटर्नल रीजंस आर वन, देयर इज टू मच ऑफ वर्कलोड not only in the at home but also in workplace where parents are working out. Our high targets of goals are unsupportive seniors, juniors, colleagues, relatives, members of the society. Office में मदद, in fact I'm talking about special educators. They have a lot of responsibility in the office, and if there no cooperation, then all the responsibility lies on them. घर में भी, if nobody is helping us, then we have to take care ourselves. No appreciation of work. हम इतना काम करते हैं, but there's no one who is appreciating our work. Work itself is tough. Yes, every work is tough unless we make it easy. No time for personal care and other works. And when things go wrong, और जब कुछ चीज गलत होता है तो उसमें स्ट्रेस तो बढ़ता ही है. इट इज नेचुरल. एज फार एज द इंटरनल जो चीज अपना कंट्रोल में है, वो कौन सी है जो ठीक से डिसिप्लिन ना होने से स्ट्रेस बढ़ा सकता है. एक तो है नो मेथड टू प्रायोरिटाइज वर्क. ऐसे आज सपोज वी हैव 10 टास्क टू बी डन. इफ यू डू नॉट प्रायोरिटाइज कौन सी पहले करना है, कौन सी बाद में करना है, कौन सी कल भी कर सकते हैं, सो कंफ्यूजन से स्ट्रेस बढ़ सकता है. नो टाइम मैनेजमेंट, कौन सी काम के लिए कितना टाइम देना है, नींद या कम हो या कोई फ्रेंड से बात करना, मोबाइल भी यूज करना. टाइम इज नॉट, द माइंड इज नॉट फोकस्ड एंड वेरी रेस्टलेस. जब माइंड फोकस नहीं है फिर भी स्ट्रेस होता है क्योंकि काम ज्यादा पड़ा है सामने. कंपेयरिंग विथ अदर्स, इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली हम जब पेरेंट्स से मिलते हैं जिनके बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो कहते हैं कि हमारा लाइफ तो बर्बाद हो गया है, कि हमारा बच्चा तो पूरा हमारा पे
पूरा लाइफ डिपेंडेंट होगा, फिर सोसाइटी पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा। सो ये चीज है जो स्ट्रेस अपने अंदर बढ़ाता है। इग्नोरिंग फिजिकल हेल्थ, जब केयर गिवर काम करना पड़ता है और अपना अपना हेल्थ ठीक नहीं है, फिर स्ट्रेस जरूर बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि बच्चा का भी पूरी तरह देखभाल करना चाहिए। वर्किंग अननेसेसरली, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने से भी स्ट्रेस हो जाता है और अब काम पे इफेक्ट पड़ सकता है। नॉट लाइकिंग द वर्क एंड वर्क एनवायरमेंट, घर में हूँ या अपना ऑफिस में हूँ, जब काम पसंद नहीं है और काम का जो लोग है वो ज्यादा अपना तरफ सपोर्ट नहीं है, तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो इन सब जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, हाउ डू वी हैंडल देम, किस तरह अपन मैनेज कर सकते हैं, वो है हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड। सो सॉल्यूशन कहाँ है? तो ऐसा है, प्रकृति जो है, नेचर है, हम सबके लिए चार इंस्ट्रूमेंट्स जो दिया है जो उपयोग करने के लिए। और जब ये चार उपयोग करेंगे तो अपने पास एनर्जी, शक्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है। और जब बढ़ेगी तभी तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब इन चारों को अपन ठीक से केयर नहीं कर रहे, उसके लिए हर हर रोज उसको ठीक तरह केयर करना चाहिए, और करने से काफी मदद मिल सकता है। एक है अपना लिए प्रकृति शरीर दिया है। शरीर, बॉडी, जो हाथ पांव आंख कान सब देखने के लिए, काम करने के लिए सही हेल्थ है, तो हम काम जो भी अपना सामने काम है, जो अपना डिजायर्स है, वो भी फुल हो सकता है। माइंड, एटीट्यूड किस तरह पॉजिटिव है, चंचल है, रेस्टलेस, कंसंट्रेशन नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसको भी किस तरह अपन अपना कंट्रोल में रखना है, तभी तो अपन काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, विजडम, ये भी है, नेचर अपन को दिया है कि जैसे हम रोड पे चल रहे और कहीं इस तरफ उस तरफ देख रहे, तो जरूर हम गड्ढे में गिरने का चांस है। लेकिन अपन अलर्ट रहेंगे और आगे क्या है पता चलेंगे, तो अपन सावधान से चलेंगे तो हम बहुत सेफ रहेंगे। इंट्यूशन, सीइंग बियॉन्ड द सीन, ये भी जब माइंड काम होता है, इंटेलिजेंस यूज होता है, तो अपन आगे भी क्या हो सकता है और लोगों के बारे में अंडरस्टैंड करना वो भी आसान हो जाता है। तो इन सब बॉडी माइंड इंटेलिजेंस, इंट्यूशन और इवन इमोशंस, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तन मन दिल दिमाग, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे गाड़ी के चार पहिए हैं। इन सब चारों को ठीक से अपन देखभाल करेंगे। अब गाड़ी में देखते हैं एक पहिया भी खराब है तो गाड़ी मूव नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा कि अपन चार पहिए ही अपना खराब है, क्योंकि अपन उसको ठीक से अपन अटेंशन, केयर डेली बेसिस पे अपन नहीं दे रहे। तो ये है, हम बता देंगे किस तरह अपन कुछ। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि टाइम ज़्यादा नहीं है, पूरा दिन बहुत काम रहता है, लेकिन हम बता देंगे कोई किस तरह जो छोटा टिप्स हम देंगे, उससे थोड़ा माइंड कंट्रोल करने से बहुत टाइम अपना सामने रहेंगे। और उससे जब अपन मजबूत बनेंगे और अपन खुश रहेंगे, तो आगे भी अपन खुशी बांट सकते हैं और लोगों को और ज्यादा मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सेल्फ केयर क्या होता है? सेल्फ केयर ये है अपना बॉडी माइंड और सोल, इन सबको पूरी तरह ध्यान रखना है और उनको ध्यान देना है और उसके लिए काम करना है, उसको बोलते सेल्फ केयर। तो उससे क्या इंपॉर्टेंस है? इससे अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है बॉडी पे और माइंड पे। और ये होने से अपना लाइफ बहुत, और किस तरह अपन प्रैक्टिस करना है सेल्फ केयर, एंगेजिंग इन डिफरेंट टास्क। या सो तो नेक्स्ट स्लाइड। या तो इसमें हम एक चार्ट बनाया है, तो देखेंगे अपना लाइफ किस तरह कंट्रोल हो रहा है। प्रेजेंटली ये है, अपना माइंड इतना रेस्टलेस है कि अपना माइंड ही पूरा डिसाइड कर रहा है कि बॉडी को किस तरह यूज करना है,
दिमाग को कैसा यूज करना है, कैसा कंट्रोल करना है, दिमाग को कंट्रोल करना है, विल पावर और काइंड, इन सब को माइंड ही अपना कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम लेजी है, आलस्य है, तो हम बोलेंगे, बॉडी को बोल देंगे ठीक है आप सो जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। और माइंड इतना स्ट्रांग है कि अपना जो दिमाग है उसको भी अलाउ नहीं करता है कि हमको सही टाइम पे एडवाइस देने के लिए। और विल पावर तो बहुत कम हो जाता है क्योंकि माइंड बोलता है कि हम ही पूरा पावरफुल है और काइंडनेस भी नहीं दिखाते हैं। तो किस तरह अपना लाइफ दैनंदिन जीवन होना चाहिए, तो जो बुद्धि और करुणा है, ये दोनों माइंड की जगह प्रायोरिटी लेना चाहिए। तभी तो जब बुद्धि आगे बढ़ेगा, तो बुद्धि डिसाइड करेगा कि बॉडी को किस तरह अपन हैंडल करना है, माइंड को किस तरह हैंडल करना है, और विल पावर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और पॉजिटिव एटीट्यूड जो डिटर्मिनेशन है, इसको किस तरह अपन बढ़ाना है। तो विजडम, अपना बुद्धि और करुणा, कंपैशन, ये चीज अपन कल्टीवेट करेंगे तो अपना बॉडी, माइंड और विल पावर पूरी तरह अपना कंट्रोल में रहेगा और लाइफ और आसान हो सकता है। जितना भी अपने सामने प्रॉब्लम हो, तो अपन कर, जैसे काम है, अपन जो काम करना है, दो ही रास्ता है, या खुशी से करो या रोते काम करो। हाँ, सबको प्रॉब्लम वर्क में तो है ही है, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ आसान होता है, लेकिन जिस तरह बोलते कि अपन जैसे खेल में जो कितना आसानी से एंजॉय करते खेलते और टाइम भी इतना अच्छा पास होता है, उस तरह काम को भी खुशी से करेंगे, अपना आप मोटिवेट करेंगे, तो वर्क स्ट्रेस कम लगता है। ये कहते हैं कि जब प्यार से अपन काम करेंगे तो हम खुशी रहेंगे। तो जब काम करेंगे और खुशी से करेंगे, प्यार से करेंगे, और स्ट्रेस नहीं रहेगा। जिस तरह माँ बाप है, माता है 3 बार खाना पकाती है, लेकिन उनको स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि प्यार से करती है, ये हमारे बच्चों के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा तक अपन ज्यादा बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं, लेकिन सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना पर्सन विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उनका क्या प्रॉब्लम है सुनना है, स्पेशल एजुकेटर भी सुनना है कि इनका क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स भी सुनना है। तो उनका सुनने से, ये कहते हैं कि जो सुनना ही प्यार है, जितना उनको सुनेंगे उतना प्रॉब्लम्स अपन को पता चलेगा और उनका इलाज हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट जो मैं कहा था इज वेरी इंपॉर्टेंट। या जो बड़े महात्मा को हो या अपना लिए साधारण व्यक्ति को 24 घंटा ही अपना सामने है। तो उन लोग इतने इसलिए क्यों आगे बढ़े हैं, क्योंकि 24 घंटा पूरी तरह productively utilized किया है। They've used their time very productively. So time is very precious, and if you can use the time very well and use time especially for our self-care and mainly our work, it's very important. And also whatever task that we are supposed to do today, if you can plan it previous night, it becomes very easy to prioritize. नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जो केयर गिवर्स है, जो जब ज्यादा ध्यान देते हैं अपने बच्चों पे, तो हो सकता है कि अपना नींद पे कम टाइम देते हैं, सोचते हैं कि क्यों ज्यादा सोना है, सोने से फिर हमारा प्यार कम हो जाता है, इस तरह सोचते हैं। लेकिन बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस भी ये बता रहा है कि जितना अच्छा नींद आएगा, क्वालिटी नींद और क्वांटिटी आएगा, तो अपना हेल्थ सही रहेगा, माइंड सही रहेगा, और डिजीज, जो बीमारी आने का चांस नहीं होता है। ज्यादा तक बीमारी यही होता है कि जब नींद ठीक से नहीं आता। तो इसमें हम जो कुछ आदत अपन रखना चाहिए कि जो अर्ली डिनर जो है जल्दी लेना है और कम भी लेना है, इस और थोड़ा गैप भी रखना है जो खाने और सोने में। और जितना जल्दी सोएंगे और जितना जल्दी उठेंगे, बॉडी बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा मेडिटेशन करके सोने से और नींद बहुत बढ़िया आएगा। जब केयर गिवर इस तरह पेरेंट्स या केयर गिवर्स करेंगे, तो बच्चे भी सीखेंगे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हो या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। नाउ फिजिकल वेलबींग पे बात करेंगे। ये इसमें फिजिकल एक्सरसाइज, अब पेरेंट्स और केयर गिवर्स और इवन स्पेशलिस्ट कहेंगे कि हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन साइंस ये बता रहा है कि
एक्सरसाइज करने से नॉट ओनली बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसा ये सेक्रीट होता है जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, एंडोफिन्स। उससे जो भी पेन है, पूरा दिन जब काम करने से पेन है, उसको हैंडल कर सकता है। तो जब नहीं करेंगे फिर जो स्ट्रेस बढ़ते रहेगा। तो एक्सरसाइज करने से और डाइजेशन भी ठीक से होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, रोग आने का चांस नहीं। इसलिए 40 घंटा, 40 मिनट हर रोज करने से, योगा हो या और कोई वॉकिंग हो या रनिंग हो, जो भी हो, बाहर जाने का टाइम नहीं है, घर में भी कर सकते हैं। तो जब बड़े करेंगे तो बच्चे भी जरूर सीखेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसके लिए टाइम जरूर लेना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। नेक्स्ट स्लाइड। जो ईटिंग हैबिट्स है, जब भी हम डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, वो ब्लड टेस्ट करता है। अब ब्लड में क्या देखता है, कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है, कितना फैट है, यही देखते हैं ना। तो हम जो खाना खाते हैं वही तो ब्लड में असर पड़ता है। तो सही डाइट, जो विटामिन, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब जो भी अपना बॉडी के लिए जरूरत है, बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फैट ही ज्यादा खाना है, प्रोटीन नहीं खाना है, ऐसा नहीं। बैलेंस होना चाहिए, तभी तो अपना बॉडी सही रहेगा। और जंक फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, और पानी सही पीना चाहिए। कभी कभी थोड़ा फास्टिंग भी करना है, क्योंकि बॉडी भी एक मशीन है, उसको भी थोड़ा रेस्ट मिलना है। तो जब केयर गिवर्स, पेरेंट्स ये आदत अपना ऊपर अप्लाई करेंगे, तो बच्चों को सिखाना जरूरत नहीं, वो अपना ऑब्जर्व करेंगे और वो हैबिट्स, अच्छा हैबिट्स हमसे सीखेंगे। नेक्स्ट। हाँ, ये जो हम स्लाइड दिखाया है, ये आप सोचते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं का है जो सोफा में सो के काम कर रहा है, नहीं, ये हम सबका है। जो भी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका हाल इस तरह होता है, जो पेट भरते रहता है। और जो भी पढ़ के इस तरह इस पोज में, जैसे अपन देखते हैं जो बच्चे इस तरह लेट के भी काम करते हैं, तो इस पे भी काफी खतरा हो सकता है। जैसे आंख खराब हो सकता है, कान भी खराब हो सकता है, और नेक और स्पाइनल कॉर्ड भी इफेक्ट हो सकता है। और इससे ओबेसिटी और काफी जो डायबिटीज ये सब आ सकता है। तो जब हम एल्डर्स इसको ध्यान से इस तरह बुरी हैबिट्स नहीं रखेंगे, तो बच्चों पे जरूर अच्छा असर पड़ेगा। नेक्स्ट। तो नाउ आप सबको पता है कि जिस तरह मोबाइल्स और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, ये तो जरूर यूज करना ही है, लेकिन डिसिप्लिन से यूज करना है। कितना जरूरत है उतना यूज करना, जितना जैसे वर्क, काम के लिए या कुछ सीखने के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरह हो रहा है कि पूरा दिन अपन सोशल मीडिया से जो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए तो अपन बोलते हैं कि पूरा दिन हमको टाइम नहीं मिलता। जब मोबाइल इस पे टाइम कटेंगे तो 4-5 घंटा आपको आसानी से मिल जाता है, और उसमें आप ये सब एक्सरसाइज, खाना पीना, ये सब पूरा डिसिप्लिन आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम बताए सोफा पे करने से क्या क्या प्रॉब्लम है, यही है कि आंख, कान और ब्रेन भी खराब हो सकता है ज्यादा रेडिएशन इस गैजेट से मिलने से। नेक्स्ट। मल्टीटास्किंग, हम देखते हैं कि एक ही समय एक से ज्यादा काम करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। जो भी अपन काम करते हैं, एक ही काम करो और उसी पे ध्यान देना है। जैसे अपन खाना खाते हैं, हम देखते हैं सभी को कि खाते समय मोबाइल पे है या फोन पे बात कर रहे हैं या कोई और कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर खाने का मजा कैसा आएगा। तो इसको, इससे माइंड भी स्ट्रेस हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो और जो खाना का असर भी अपना बॉडी पे नहीं पड़ता है। तो इसलिए खाते समय या काम करते समय उसी पे 100% ध्यान दे, काम भी अच्छा होगा और माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अब स्कूल कॉलेज में तो अपन काफी चीज अपने पास हॉबीज था, लेकिन बड़े होने के बाद या अपन टीचर बने या पेरेंट बने, तो अपना हॉबीज पूरी तरह खत्म हो गया। वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हॉबीज अपन को, वट एवर गिव्स अस हैप्पीनेस, वी मस्ट कंटिन्यू देम,
okay, we don't have much time, but at least one hobby we must have throughout our life. And if we can spend some time, need not be every day, at least once a week for 2 3 hours, that will give us a lot of positive attitude. We think that at least we are doing something for ourselves. वो stress buster हो जाता है. So it's very important कि काम करते हुए अपने लिए भी सेटिस्फेक्शन के लिए अपन कुछ ना कुछ हॉबीज ढूंढना चाहिए. हैंडलिंग वर्क, जैसे हम कहा कि काम जो करना है बहुत स्किलफुली करना है, श्रद्धा से करना है, जो भी हो, जितना भी प्रॉब्लम हो. और दूसरा पॉइंट है फोकस नॉट ऑन आउटकम्स ऑन प्रोसेस. मतलब ये है कि जो अपन जो भी काम करते हैं, काम पे ध्यान देना है, लेकिन इसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस पर ध्यान नहीं देना, कि वो अपने हाथ में है ही नहीं. जैसे हम एग्जाम लिखते हैं, हमारा पूरी तरह जो कंट्रोल में है, सिर्फ हम किस तरह प्रिपेयर करना उस पर हमारा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एग्जाम में कितना मार्क्स आए वो अपना कंट्रोल में नहीं है. तो जितना अपन काम पे ध्यान रखेंगे, रिजल्ट अपना आप अच्छा आ जाएगा. और इसमें एक चीज हम बताएंगे कि जैसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे दिव्यांगजन हैं, उनका तो प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा बच्चे जल्दी आगे कैसे बढ़े, और जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी, जो नॉर्मल जो चिल्ड्रन है, उनके जैसे कैसा बन सकता है, कैसा आगे बढ़ सकता है, पैसा कमा सकता है. अपन ये सोचना चाहिए कि अपना काम है सिर्फ उनका अच्छी तरह देखभाल करना है. और जितना अच्छा प्यार देंगे, देखभाल करेंगे, उनका इम्प्रूवमेंट होगा. कभी कभी ज्यादा सिचुएशन में होने का कम चांस है या धीरे होगा, लेकिन अपन पेशेंस रखना है, इस पे अपन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. और दूसरा भी उनका फियर रहता है कि हमारा हम जाने के बाद फिर बच्चे अपना आप कैसा अपना आप देखभाल करेंगे. हम वही बताएंगे. हम काफी चीज पूरा इंडिया में घूमा है, हम कोई एक केस नहीं देखा जब पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनका दोनों पेरेंट्स गुजर गए और वो उनका हालत खराब है. नो, जो नेचर है, प्रकृति है, उसी पेरेंट्स को चुनते हैं जो शक्ति है इनको हैंडल करने के लिए. और वही नेचर उनको जिंदा रखता है क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट है. तो इसलिए अपन इस तरह फियर रखना, डर रखना या ये चीज सही नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई हम प्रूफ कहीं देखा ही नहीं. तो इसलिए अपन ज्यादा जितना स्ट्रांग रहेंगे उतना अच्छा है. हैंडलिंग सेटबैक्स, हाँ, अपना लाइफ में तो ऊपर नीचे होते रहते हैं. जितना अपन उसको स्ट्रांग से हैंडल करेंगे, उतना उस तरह अपना अपन स्ट्रेंथ बढ़ेगा. और अपन नॉट ओनली अपना प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते, और दूसरों का, जैसे अपना नेबर है या कोई रिलेटिव है, उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उनको भी हैंडल करने का सलाह देने का अपन को शक्ति मिलता है. लेकिन अपना आप डिप्रेस हो जाएंगे तो फिर दूसरों को मदद नहीं करेंगे, और दूसरा जो काम है अपना वो रुक जाता है. तो सो प्रॉब्लम फिर अपना ऊपर असर पड़ता है. नेक्स्ट स्लाइड. या इमोशंस, जिस तरह अपन हर समय वरी रखेंगे, आई मीन उदास रहेंगे, साइंस बताता है कि अपना पेट अफेक्ट हो सकता है. इसी तरह डर रखेंगे, वो भी जैसे एड्रेनल जो हार्मोन्स है वो जनरेट होगा और उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. एंगर, ये बताता है कि अपना लीवर को अफेक्ट हो सकता है. ग्रीफ, अगेन उदास से लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है. एंग्जाइटी, टेंशन रहने से हार्ट, आपको पता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए अपन जितना अपना इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, उतना अपना शरीर को स्ट्रांग रख सकते हैं. तो हम इस चार्ट में ये बताया है कि ज्यादा चीज लाइफ में हम हर चीज को सोल्यूशन ढूंढ नहीं सकते. तो इसमें हम ये बताया कि जो अपना एफर्ट्स है, अपना एक्शंस है, एटीट्यूड है, थिंकिंग है, ये और खाना अपन क्या खाते हैं, अपन किस तरह का दोस्त है, क्या क्या अपना बिलीफ्स है, हम कितना करुणा से है. सो ये सब चीज है जो अपना हाथ में है. इसको अपन सकते हैं, अच्छा क्वालिटीज बढ़ा सकते हैं, और जो बुरा क्वालिटी उसको निकाल सकते हैं. वही अपना हाथ में है. अपन सोचते हैं कि हम लोगों को सुधार देंगे, जब अपना ये जैसे एंगर, क्रोध पे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरे लोग फिर कंट्रोल कैसा होगा. तो इसलिए अपना
में जो भी अपन चेंज हो सकता है, there I think I'm sure we'll be able to make lot of difference. The situation, the world will be same, but once we change our perspective, definitely our problems will look smaller, or maybe sometimes the problem will be a no problem. So therefore, it is in our hands how we can improve our mindset. Next, controlling a mind. We all say that we have to control our thoughts, but how it is to be done? Yes, there is, just as we clean our body every day, we brush our teeth, and we have to give time to our mind. We are not doing that. So when we don't do that, the mind becomes like a wild horse, and it will control us, and it will take us to places where we are going to suffer. So I will tell you a few techniques how you can spare some time for yourself, and how we can bring our restless mind, make it calm, so that our life will be much better. You One is watching our thoughts. Close your quietly watch your thoughts by sitting and closing your eyes. Don't give any attention. जब thoughts आते रहते हैं, उन पे focus नहीं दीजिए. Let the thoughts come and go. And if you can do this for about 5 minutes, you will slowly see that the thoughts are coming and going, and less thoughts are coming. You can also see little gap between different two thoughts. So that way, the pace of thoughts will reduce, and over the period of 3 to 6 months, you will find the number of thoughts will reduce, and we are able to decide on which thought we have to give focus, so that that thought can be converted into action. Then watching the breath, it's a very simple method of where you close your eyes, and the natural breath that is happening, inhaling and exhaling, just watch that breath. If you can do this for 5 minutes, you will find that earlier so many thoughts used to come, but now there'll be only one thought which is concentrating on the breath, the incoming and outgoing breath, and slowly the mind is going to become calm. Now, practice mindful breathing. This also can be done by forcing our breath. For instance, you breathe, take a long breath and count 1, 2, 3, 4. You can hold the breath again to 1, 2, 3, 4, and exhale 1, 2, 3, 4. So this also helps you to keep put your mind totally under control of the breath, and also it helps you to increase oxygen into your lungs. Yeah, next. Now, dropping negative feelings. Now, there are many negative thoughts that we have. We spend time in gossips, ego, jealousy, hatred, anger. So many, all these take away all our energy. That is why we feel tired by end of the day. So if we can watch them, and suppose I'm jealous, okay, I should be aware. We cannot stop being jealous overnight. But if we can keep watching whenever we feel jealous, and that will slowly help us to reduce. Automatically, it will come down because we are watching, and we are saying it is not a good habit. So gradually, that is going to come down. Now, reading motivational life stories and books, very important, especially for special educators who are handling difficult situations. They must they can improve their willpower capacities and daily motivation through reading books and good life stories. Even in social media, we have good success stories that will help us improve our own motivation. Next slide. In fact, prayer, none other than Dr. APJ Abdul Kalam, who was our president, said that prayer improves our energy. When we pray to God, a lot of energy that is inside us, जो अंदर अपना काफी एनर्जी है, वो बाहर आ जाएगा, और वो प्रेयर से जो पूरा दिन का काम हम कर सकते हैं. So prayer helps us to tap and develop these internal inside power. So I feel I have been doing that, and I'm sure it has helped me. So if we can spend some time praying in the morning and evening, pray for not only yourself, for your child, but also to the whole world. That will make us
more broad-minded, and it'll make us concentrate less on our worries, and we'll be able to help other people. So keep this also as part of your 24-hour schedule. Next, silence. हम तो we are talking throughout the day, morning to. I don't think there's any time where we remain silent. And whenever we talk, we are using our energy. And whatever energy comes after good sleep, that is being spent on talking, good or bad, without any proper regulation. If we can be silent, that energy which is within us is conserved, that can be used for right purposes. So every day, if we can observe silence for some time, especially when the child is sleeping or whatever, or using less of gadgets. This way, we are able to make our body, mind silent. And I'm sure with this, we'll have more energy to do more work. Discover yourself. ये बहुत जरूरी है. ये अपना आप पहचानना बहुत मुश्किल आसान है, क्योंकि अपन जब बैठेंगे अपना आप सोचेंगे कि साइंस भी ये बताता है कि टू इंडिविजुअल सेम नहीं है. इनफैक्ट इवन नॉट ओनली गुण बट डिजायर्स बट इवन टम्परेंट्स भी सेम नहीं होता है. तो फिर क्यों अपन दूसरों से कॉपी करना है, इमिटेट करना है, compete करना है तो अपना आप से compete करो. तो ये जरूरी है कि अपना आप इंडिविजुअल अलग है, तो सोसाइटी जो भी बोलता है उसके पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कि वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन अपना आप ज्यादा दृढ़ होना चाहिए. अपना बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में जो भी बोलेंगे उस पे वी शुड नॉट बी अपसेट, वी शुड बिकम स्ट्रांग. अपना काम करना चाहिए, कि हर आदमी का अपना अपना कर्म, अपना अपना रास्ता अलग होता है. तो अपन जितना अपन खुशी रहेंगे और अपना ऊपर ध्यान देंगे, अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे और अपना काम सही करेंगे, देन आई एम श्योर अपना लाइफ बहुत बहुत अच्छा होगा. सीकिंग सपोर्ट ये जरूरी है. पहले जैसे मैं बताता था, बड़ा फैमिली होता था तो काफी लोग हैं जो मदद करने के लिए अपन उनसे बात कर सकते हैं, और या अपना प्रॉब्लम बताने से पहले उनको पता चल जाता है कि अपना क्या प्रॉब्लम है. लेकिन अब अकेला हो गए, तो अब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि या फ्रेंड से या कोई रिलेटिव से बात करना है, जो भी प्रॉब्लम है, जो फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो. लेकिन अब तो ऐसा है, काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, फिजिशियन है, इन सब लोग हैं अपना सोसाइटी में. जब जो प्रोफेशनल्स है, जो अपना प्रॉब्लम्स काफी बड़ा हो रहा है, तो उनसे कंसल्ट करने में कभी देर नहीं करना चाहिए. सही टाइम पे सही कंसल्ट करेंगे और इलाज तुरंत मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकता है, फिजिकल या मेंटल हो. तो इस तरह हम अपना ऊपर ध्यान देंगे, तो आई एम श्योर दैट वी आर एबल टू हैंडल आवरसेल्व्स. सो आखिरी में हम यही बता देंगे कि जब अपना शरीर, when we handle our body, mind and intelligence with regular attention and we take care of it on daily basis, I am sure वो तो that is our real investment. और काम करने के लिए जो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, सस्टेन प्रोडक्टिविटी, उसके लिए अपना एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी मिल जाता है. तो सही बहुत खुशखबरी ये है कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है अपना हाथ में है. सेल्फ केयर करेंगे तो अपना आप जब मजबूत होंगे, तो नॉट ओनली अपन खुश रहेंगे एज एन इंडिविजुअल, बट अपन जो दूसरा बच्चे हो या सोसाइटी में किसी को भी अपन मदद करने के लिए अपना शक्ति रहेगा और इच्छा भी रहेगा. थैंक यू. Thank you very much, Rao sir. That was very insightful indeed. And I believe we have some questions that have been sent to us on WhatsApp. So, sir, आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप questions answer करें. These are questions that have come in to us. What are some of the biggest challenges that caregivers face today?
if you were to just put it in a nutshell, Yeah. from the ones that you've mentioned. So caregivers का मेन प्रॉब्लम है, एक तो है स्पेशली पेरेंट्स है, उनका ये है कि हमारा बच्चा किस तरह कितना जल्दी इम्प्रूव होगा। मेन अब जैसे अपना जो कफ एंड कोल्ड कुछ थोड़ा अपना फीवर आता है, अपन को पता है कि डॉक्टर से मिलने से 3-4 दिन गोली लेने से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनका प्रॉब्लम इस तरह सीरियस है, हो सकता है उनका डिसेबिलिटी परमानेंट है, या हो सकता है थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, और भी बहुत स्लोली, जैसे फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस तरह देंगे, ग्रेजुअली हो सकता है इंप्रूवमेंट दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है 6 महीना 1 साल के बाद कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। इवन लर्निंग डिसेबिलिटी हो, स्पीच का हो, ये सब चीज इसमें अभी साइंस अच्छा आगे बढ़ा है, लेकिन मेनली अपन इम्पेशेंट है। जो प्रोफेशनल तो काम आप करेंगे, तो लेकिन अपन इम्पेशेंस से अपना स्ट्रेस बढ़ता रहता है, तो इसलिए जो क्विक रिजल्ट स्ट्रेस होना, ये बहुत ये प्रॉब्लम होता है केयर गिवर्स। दूसरा है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, ये स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सीरियस है। तो इसमें कोई सोसाइटी सुधरने का इलाज नहीं है। अमन सुधरने का अपन तो गवर्नमेंट और सोसाइटी करते रहेंगे, लेकिन हर जनरेशन इनका जो माइंडसेट है लगता है ऐसा चलता रहेगा। लेकिन चेंज ये सकते हैं कि अपना तरफ से अपन अपना मजबूत होंगे, तो जरूर ये अपन इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। सिचुएशन तो ऐसे रहेगा, लेकिन अपना माइंडसेट बदलने से अपना जो पूरा दिन का जो एटीट्यूड है सही इम्प्रूव हो जाएगा। नो, तीसरा प्रॉब्लम है कि हम पेरेंट्स का ये डर लगता है कि हम जाने के बाद फिर बच्चों को कौन देखभाल करेगा। इसमें हम बता दिया ऑलरेडी, लेकिन फर्स्ट तो ये है कि कोई इस तरह सिचुएशन हम देखा ही नहीं, और दूसरा है हम ये भी देखा है कि नॉट ओनली पेरेंट्स, उनके साथ जो सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर या रिलेटिव्स, कोई ना कोई उनको प्यार इतना ज्यादा होता है कि वो आगे बढ़ते हैं और मदद करते हैं। तो इस पे भी कोई डरने का बात नहीं है। और ओनली थिंग इज जो प्रॉब्लम जो होता है केयर गिवर से, जो जितना डरते रहेंगे, जितना वरी रखेंगे, जो पॉजिटिव एक्शन लेना है, जैसे प्रोफेशनल के जाके मिलना है, वो चीज नहीं हो रहा है, और वो होने से बच्चों का ज्यादा टाइमली इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो सर, आपके हिसाब से एक सिंपल सेल्फ केयर टिप क्या हो सकती है जो हर केयर गिवर फॉलो करे? एक सिंपल टिप। या तो मैं ये बताऊंगा कि जो 24 घंटा है, 24 घंटा हम जो स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 24 घंटे में मैं हम क्या काम कर रहा हूँ, और उस समय हमारा माइंड एटीट्यूड कैसा है, और हम क्या कोई चीज पे अननेसेसरी ध्यान, जैसे वरी, सोच, गलत सोच पे टाइम वेस्ट हो रहा है, या ऐसा चीज पॉजिटिव नेगेटिव, और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आप पूरी तरह एक पेपर लेके चार्ट बनाएंगे कि 24 घंटा मैं किस तरह यूज कर रहा हूँ, जिससे हम बता दें कि किस तरह बॉडी माइंड इंटेलिजेंस पढ़ाई, ये सब सही रिलेशनशिप्स, ये सब होना है। तो 24 घंटे में सबके लिए कितना टाइम दे रहा हूँ, तो ये करने से आपको पता चलेगा कि ज्यादा टाइम वरी पे वेस्ट हो रहा है, और अपना पे ध्यान ज्यादा नहीं हो रहा है, और जितना अपन सही हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे, बच्चे भी उस, जैसे हम एक कॉर्नर पे बैठ गए और साइलेंस में बैठ गए, ध्यान कर रहे, हो सकता है बच्चा भी अपने साथ बैठेगा, लेकिन अपन ही मोबाइल पे पूरा दिन स्पेंड करेंगे, फिर बच्चे को कैसा बोल सकते हैं कि आप मोबाइल यूज मत करो। तो हम यही कहेंगे, ये एक सिंपल जो पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, या बच्चे है या नहीं है, एवरी इंडिविजुअल को ये है, स्पेशल एजुकेटर, एनी इंडिविजुअल, कि ये 24 घंटा का जो चार्ट है, आइडियल चार्ट बनाना है कि हम ये सब जो 4 इंस्ट्रूमेंट्स है, तन मन दिल दिमाग, इन सबको किस तरह डेली बेसिस पे हम ध्यान दें। सिर्फ ब्रशिंग और नहाना ये नहीं, इन सब को किस तरह 24 घंटे में कौन सी समय और कितना समय इनको देना है, आप आइडियल चार्ट बनाएंगे, और ये हर रोज देखते हुए कि एक ही आइटम हर 3-4 महीने में एक एक
हैबिट उसको ऐड करिए, तो आसान हो। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 10 आइटम आज ही कल से शुरू करो, नो। तो ये मुश्किल है, शुरू करें तो भी फिर बंद हो जाता है। सो प्रिपेयर एन आइडियल चार्ट फॉर योर सेल्फ, व्हाट इज गुड फॉर मी। बिकॉज ये नहीं कि आप जो सेवा कर रहे हैं वो सही है, लेकिन सेवा अपना को भी सेवा करना चाहिए और अपना आप भी खुश रहना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मैं दिव्यांगजन बच्चा पैदा हुआ, क्या हमारा लाइफ अब खत्म हो गया। ना, ऐसा नहीं हो सकता। जितना भी काम करो ठीक है, लेकिन अपना लिए ध्यान देंगे और अपन जो करने से अपन को खुश मिलता है वो भी अपन करना चाहिए। कभी यू शुड नॉट फील गिल्टी कि अरे अपना मैं कोई मूवी देख के एंजॉय कर रहा हूँ, मैं ये पाप है क्योंकि मैं उस समय मैं बच्चों का देखभाल कर सकता था। नो, अपना लिए भी अपना जो खुशी हो सकता है उस पे भी ध्यान देना चाहिए, अपना लाइफ भी आगे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज भगवान नेचर जो प्रकृति जो दिया है, दोनों के लिए संभालने के लिए दिया है, बच्चों के लिए और अपना आप के लिए। सर एक ही को बच्चों के लिए देखभाल करेंगे फिर अपना लाइफ इनकम्प्लीट होगा, फिर आप लोग बाद में सोचेंगे कि हम हमारे लिए कुछ नहीं किया। सो इसलिए अभी से स्पेशल एजुकेटर हो या इवन physiotherapist, anybody, any rehabilitation profession who is working very hard. It is a very tough field where you work hard but you don't see much progress. इसमें very important that all have to have patience and ability to endure, resilience होना चाहिए। और इस तरह अपना ऊपर ध्यान देंगे 24 आवर शेड्यूल, इससे और ज्यादा मंत्र हम और ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। सोना कब सोना है, कब उठना है, कौन सी खाना खाना है, एक्सरसाइज कब करना है, और लोगों के साथ अच्छा मिलजुल के उनके लिए भी टाइम यूज करना है, ये सब चीज उसमें आ जाता है। और जब ये सब चीज सोचेंगे, बाद में अपन पस्त नहीं आएंगे, वी विल नॉट फील रिग्रेट, oh, I have not met my friend for last 10 years. No, these all have to happen consciously on a regular basis. If not every day, at least once a week, we should get in touch with our friends and do whatever possible so that we live a full life and we should not regret for any lapse from our part. That's very interesting, sir, because it's important to take care of oneself, no doubt. Some other questions. We briefly touched on self-care for teachers, for parents, and so on and so forth, and caregivers in general. But if we were to speak about parents, ऐसे कौन से quick self-care activities हो सकती हैं जो parents can do on a daily basis? Yes, supposing parents, one thing is they should have a control on use of gadgets. That's very important because children are using it very recklessly. So if parents can stop using, if they start reading books, I'm sure children also will use that. Second thing, if they can do exercise every day, because for children, I'm told even yoga meditation is going to have an impact on a child's mental health. So why not parents start doing that, listening to good music, art, certain other hobbies, and bring them into very healthy habits so that the child can learn from the parents. So sleeping in time, getting up in time, eating healthy food, exercise. I think these are the few things if the parents can inculcate, the children will automatically learn. So I think it's important for us. I'm just going to change the frame, sir, so that I think everybody is wondering who's asking the questions. Yeah. So maybe I'll just come into frame as well. So I think it's very important as a lesson that as parents, we children mirror what they see their parents do. So it's very important for us to also have those good habits from parents' perspective. Now, what about teachers, sir? What are some small habits that can help teachers stay fresh? Because teachers deal not just with one, but many students. And in such a situation where there's a class taking place or they're at school, what can they do in order to stay, upbeat and motivated at all times? Yeah, first, they themselves should feel motivated and they should be empathetic. That's very important. Second thing, what I feel is that teachers, they should guide the peer group of the children. Supposing there's a child with disability and child without disability, it is the duty of the teacher. The teacher has to be so creative and innovative to see how the peer group is able to handle
the person, the student, the friend with disability. If that can be done, I'm sure that is a very important task, because I'm told that whenever some bullying, something happens, it has a deep impact on the child. I mean, not only on a child with disability, but even on child without disability. So if the parent can, if the teacher can help guide all children, all students to behave well with each other, that is a very important, and that requires a lot of time and energy. But if the student teacher can spend on that, and second thing, have one's own good habits also, so that the children learn. Supposing the student teacher is a smoker, definitely they will learn something of it. So having good habits is very important. And also the parent, the teachers, I feel, should be in constant touch with the parents, so that they give the feedback about the child to the parents. So these are the few things I feel the teachers can really contribute to the health of the child with disability in this manner. So I always believe, and I think most parents and teachers will agree that as far as the future of a child is concerned, both teachers and parents play a very important role. Yes. Without each other's support, the child cannot go ahead and be successful in his academic life and even as an adult in general. Very good. So this question really resonates with me. There is, I guess, a teacher or a parent, I'm unsure who's asked this, but how can teachers support parents in their caregiving journey? Because it's always said that parents must support teachers. But I think if we were to look at the other way around, since teachers see more students, how can they offer an extended support to the parents? Yeah. If teachers can, because since the child is going to be there whole day with the teacher, not at home. So in fact, the teacher, if the teacher is very observant, the teacher is able to understand what is the problems that the child is facing, and teacher is the one who can give a good feedback, can not only observe and also understand and give good feedback to the parent, and also give a solution how to handle it at home. This is one important thing. Otherwise, the parent will never know. Parent, out of love, will not be able to see the child very objectively. That is one important role of the parent, of the teacher. And teacher also have to be very patient with the parent, so that the parent is able to handle the child very professionally on a day-to-day basis, and give some skills how to handle. That's very important, because the teacher is already skilled in many ways. So if the teacher can impart certain skills, he or she is sharing the burden, and I'm sure the parent will be ready to handle that burden, and it will definitely bring a lot of improvement, because improvement in school and also at home will make a lot of difference on the child. Indeed, I think this is a double-legged legged stool where the student sits. So support from both ends is very, very important. In fact, we can call a teacher as an extended parent, and we can call parent as an extended teacher. So if they can both can complement each other, naturally the child is going to improve. Indeed. Another question. I think, Jolly ma'am, the slide has moved. Yeah. So another question that we have is, this has obviously come from a principal perhaps. What kind of wellness activities can schools arrange for their staff? Given that there are so many caregivers in school, what could be some such wellness activity? Yeah. I mean, the general thing is that yoga, meditation, that is there. But definitely these two are very important, I feel. If the school can invest on yoga meditation, because it really calms the mind. We are with ourselves, and at least we know how restless our mind and how we can calm it. More importantly, I think there should be some a way out, how I'm able to tell my problem. Either parents or either teachers or even students. If somebody is there, a counselor, because even teachers also undergo a lot of stress, and they hesitate to go to a psychologist or a psychiatrist or a clinical psychologist outside. So if the school itself can provide some way where each one can easily approach, there is nothing like it.
because in these matters there's a lot of delay, there's a lot of hesitation, and there's a lot of they don't want to even discuss with friends. So if we can encourage people to share their problems at the right time openly with a professional, I'm sure that will make a lot of difference, and definitely that will help them. And second thing is that somehow we have inculcate a lot of resilience and self-confidence in these people, in the teachers. That's very, very important because everyone is passing through a lot of depression, not only in handling the school affairs, but also at home. So they have to handle both sides. So if we can, in the normal time, if we can strengthen their resilience, I'm sure in the difficult times they're able to handle themselves. So I feel, in fact, recently the CBSE has come out with a circular where they're going to have two type of counselors. One is a career counselor, another is a wellness counselor, a socio-emotional counselor they're called. So I'm sure, I think this is a very important step to have a socio-emotional counselor, so that the not only teachers but also students are able to approach them very much, because the focus has been only on career, on its skills. And that is how the children have been facing a lot of stress. But once you have this kind of counselor, socio-emotional counselor, wellness counselor, I'm sure they're able to share their problems. And I doubt whether this will be implemented properly well, and also by all schools. And even if in the absence of it, the school should take some steps to ensure that this task is done by somebody, if not a counselor, at least if you can train your own teacher, and who is as good as a counselor, that teacher can really help the class. If one teacher can be trained properly, in-house training, then I think that teacher can take care of at least 100 students. And I think one question for which we are all looking for the answer, which is how do we manage the time? How do you manage the time? Yes, time management is a very, it's a skill. But how can we make things possible to make sure that everything that we had to do in a day is done? And so in that case, I think question or an area where we all struggle with. Yeah. So some key tips are there. I mean, everyone's schedule is different, so it's hard to have a generic calendar, but some tips, if you could kindly. So I'll give my own personal example, how I handle my time. My own father had inculcated in me to get up early in the morning. So supposing my school is at 9 o'clock and I get up at 8 o'clock, then I have to hurriedly do everything and go to school. Now, what he did, I mean, almost when I was in fifth class, he forcefully used to wake me up at 4 o'clock. And say, imagine when I get up at, maybe sometimes, he used to tell me to get up and then immediately start studying for an hour. So I used to study, maybe I used to sleep off also. But then getting up has become a habit. Now, whether I'm reading or sleeping doesn't matter. But once you get up regularly, then slowly you will feel that you're able to study. And once that becomes a habit, you will enjoy studying also in the morning. Imagine from 4 to 9 o'clock, I have 5 hours. So in 5 hours, I can do a lot of things. I can do yoga, meditation, and reading book, or any kind. So many things I can do. I mean, I can leisurely take bath and all, which I would have done hurriedly. So now getting up early 4 o'clock is difficult if you sleep at 11 or 12 o'clock. So what has been done at home is that we used to have early dinner, say 7:30, and sleep by 9 o'clock. So 9 to 4, it's 7 hours, very good sleep. You'll get proper sufficient sleep. So this is how now this has helped me throughout my career. I managed, if not 4, I got up at 5 or 5:30. So I had enough time to do my work in case, supposing I had to do some file work at home, at office. Sometimes important things would have taken more time in office because a lot of visitors are there. So I have to bring some files. If I have to write a speech for the minister or a senior officer, then I would prepare a speech in the morning. I would write an article for myself for a book or something in the morning.
So there are many things that you can do in the morning apart from your meditation and many other things. So this is how I manage my time. Now, second thing is once you go to office, you know very well there are a lot of things to be done. So you go to office and start doing as and when you remember. It's going to be difficult. Maybe you forget some important things. So what I used to do, either I used to prepare a list of items, pending items for the next day, either previous night or early morning. So that helped me to prepare the list and also prioritize what I should do first, what I should do next, and what can be done if there's no time I can do next day. So take a paper and pen. If you can jot down, it becomes very easy to do a task, tick it, and go to the next. And this way, I was able to spend my time. And similarly, as far as 24-hour schedule is concerned, I prepared that and I followed that meticulously, even though when there's some kind of fever or some kind of or little lazy, I would have skipped for a few days or something. But generally, I followed a schedule. In fact, recently a friend of mine asked, retirement age, how you're handling yourself. So I told him, this is how I get up in the morning, then go for a walk. There was no exposure to sunlight throughout my career, because as soon as you get up in the morning, you go to office, then you come down, there's no sun. So now I've said that morning I get up, go sun walk, sun bath. I take 1 hour sun bath in the morning. So with meditation, walking, meeting with friends, having lunch with friends. So that is how I'm planning. It is done very consciously because these all are very important. So if you can do this, either retirement or even during office hours, it is all up to us how to have time for ourselves. If you can keep your mobile away, if you can keep gossip away, if you can keep, there are many negative things that we are wasting time, social media or even watching TV unnecessarily. So these are all things which you can keep aside. 3-4 hours, as I said, will be available, and we can really manage our time very well, and we can do a lot of things. And I'm sure out of 24 hours, you are able to use 20 hours, and I don't know how we can use another 4 hours. Indeed, no, time is always is of the essence, and we always feel that no matter how many hours we are given in the day, there are many things that remain unfinished. So great. Those are the questions that we had. Anjali, can you just confirm if we have received any other questions before we go on? I believe those I think no, ma'am. And no great. more questions. Thanks, Jolly. Thanks, Jolly, ma'am. So in terms of our webinar series, we have only 2 left, and I would encourage all the schools to join us. We are very grateful to Rao sir for putting together this presentation for today's webinar. And it was a very important topic, one I do hope that all the teachers, all the parents, and all the other caregivers who are part of this society, they get a chance to see it and hopefully imbibe some of these tips and tricks. These are not tips and tricks that Rao sir has shared, which are just for 1 or 2 days, but hopefully in the long run, this will certainly bring a drastic improvement in all our lives. So that was a very important topic. The next webinar that we will have will be on Friday, February 27th, and again at 11 a.m. That will be on the topic of employment. What are the opportunities and workplace inclusivity? So that is a topic that will be covered in our next session. Just to also inform all the schools that we are having 2 activities specifically for special schools. One of them is our accessibility series, and that is a national test that has been specifically curated for special schools, and it is to help students feel more empowered. This is all across India. Again, it's a national series. And this is based on 2 subjects, which is functional math and social and life awareness. Registrations for this is already open. And the other very popular, in fact, activity that we are currently having registrations open for is Beyond Boundaries. It's a dancey festival. When we organized it for the first time, the schools were unsure if they could participate and how it would be. But after participation, they were truly excited because it gave their students something extra to do, and it was a fun exercise at school. So this is again specifically for students with special needs, and they are dance competitions in both solo and group dance
with both independent and high support categories. And I want to also share some news with all of those who are watching. As you know, USO is going to be celebrating 75 years this year. We were established in 1951, and this is our 75 years in operation. As part of our 75-year celebrations, we are also coming up with 75 Sparks. What that is nationally we will celebrate 75 activities with schools across India on a national level. There are activities based on many categories, and this is something that we intend to do over the course of this entire year, slipping on into the next year. All the Sparks and the activities that we have undertaken so far can be found on our website, which is usoindia.org and /USO at 75. And as part of that, or as an extension of one of the Sparks, as soon as we conclude this webinar, we are going to also be having a book launch, which is going to be done as part of our 75 Sparks. This is very exciting because I think it's going to be the first book launch that we are undertaking, and that will be the book launch will be for which we will do in a minute. The author is Dr. Krishnaveni Achari and has a very important, very important topic. It comes in from the Diaries of a Special Educator, Decoding Hearts and Minds Solved Cases of Autism from a Detective Perspective. So what we will do is share the link of the book and the other things in terms of a Spark with you once we have concluded the webinar series. And please watch out for our messages. I think it'll be a great read for all of those who are mystery book minded. So all the details will be shared with you by email. Please watch out on your WhatsApp. All right. And with that, we sort of conclude our webinar. Thank you very much once again, Rao sir, for coming in and hosting this. Please do share, like, and subscribe to our YouTube channel. Jolly ma'am, shall I give this back to you now? Oh, thank you. Thank you all for joining. And I think... yeah, sure, ma'am. All right, Jolly, please take over. Thank you so much for Mr. Rao sir and Nina ma'am for your wonderful session, especially your question answer session was very wonderful. It was. Thank you. Thank you. Thank you so much for parents, teachers, students who have joined us today. See you in next webinar. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye. Good day.